Good morning friends. Today I am here with Forest Our Lifeline part 2 of 7th standard. In this session we will discuss about interdependence of components of forest, balance of oxygen and carbon dioxide in atmosphere and importance of forest. So let us start the session. First it is about interdependence of components of forest. We know that there are different types of plants and animals present in forest. हमने पहले देखा कि बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में प्रेजेंट है. अब उसको हम सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको कैटेगराइज करेंगे. दे आर कैटेगराइज अंडर 4 हेडिंग्स. वन इज द ऑटोट्रॉप्स, सेकेंड वन इज द हेट्रोट्रॉप्स, थर्ड वन इज द सेप्रोट्रॉप्स एंड फोर्थ वन इज द डिकम्पोजर्स. तो ये जो है ऑल कैटेगरीज को हम स्टडी करेंगे. पहला है ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे आर ऑलवेज ग्रीन प्लांट्स. सो दे आर दोज प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉप्स में हमेशा ग्रीन प्लांट्स आएगा जो कि अपना खाना खुद बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे आर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ glucose C6H12O6 and releasing oxygen into the atmosphere. So example is all green plants. Second one is heterotrophs. Heterotrophs are those organisms, particularly animals and non-green plants. So they can derive their nutrition directly or indirectly from the plants. So these examples are mostly animals like cow, deer, tiger, lion, goat, and one non-green plant is also, that is fungus. So they are called as heterotrophs. So they are the animals which directly or indirectly depends for their food on plants. यहाँ देखिए हेट्रोट्रॉप्स में ऑल एनिमल्स है और ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स है. नाउ नेक्स्ट इज द सेप्रोट्रॉप. सेप्रोट्रॉप का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किससे मिल रहा है, उसे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मीन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से. मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल फंजाई है एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो. नेक्स्ट है डिकम्पोजर. Decomposer, as the meaning is, it helps in decomposing. तो किसको डिकम्पोज करेगा? तो डिकम्पोज करेगा प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल को, प्लांट पार्ट्स को. दे विल डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस. सो they are the decomposers are the living things like bacteria, fungus or some insects. They feed on them and break down plants and animal materials into simpler form or substances, and ultimately they helps in decomposition of these parts into humus. खाद बन जाता है. Here you can see the saprotrophs, organism that live on non-living organic matter and release enzyme to absorb nutrients, that is bacteria, then mushroom and mold. Mushroom and mold, they comes under the fungi, fungus. Here decomposers, you can see fungi, bacteria, protists, insects and some worms, they are also helpful in decomposing. Now next is the food chain. What is food chain? Food chain means it is the sequential interlinking of organisms. One organism is linked to the other organism and that organism is again linked to the other organisms. So this sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from producer to consumer, then finally it goes to decomposer. So it is the sequential interlinking of organism involving transfer of food energy from the producers. Producers are autotrophs through a series of organisms
with repeated eating and being eaten. कौन किसको खाता है? So in short it is called as who eats whom. So food chain is who eats whom. There are many food chain in forest. अगर हम फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, एक भी अगर ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्टर्ब करेंगे तो अदर फूड चेन डिस्टर्ब होगा. हर कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है डिपेंड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर. So if we remove one component, then other component of the forest will be affected. So food chain is a very important part. We have to not disturb the food chain. यहाँ देखिए एक फूड चेन है, प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, इंसेक्ट है, फिर उसके बाद एक छोटा सा रैट है, देन कैट है, देन हॉक है, एंड हॉक के बाद वो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देगा. सो ए फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम. एनर्जी इज ट्रांसफर बिटवीन ऑर्गेनिज्म व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म. ए फूड चेन इज अ सिंगल लीनियर सीरीज, लेकिन इसके बाद अगर बहुत सारे फूड चेन कंबाइन हो जाएंगे तब उसे हम बोलेंगे फूड वेव. यहाँ देखिए और भी फूड चेन है. Grass is eaten by grasshopper, which is eaten by bluebird, that is eaten by snake, and finally snake is eaten by owl. And owl finally, when it dead, then it is decomposed, and again that nutrients is taken by the green plant. Here also there are different food chain: 3 linked food chain, 4 linked food chain, 5 linked food chain. In the first case, you will see that corn is eaten by rat and rat is eaten by owl. Carrot is eaten by rabbit, rabbit is eaten by fox, and fox is finally eaten by lion. Grass is eaten by grasshopper, then grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by python, and then python is eaten by eagle. So in every cases there is transfer of food energy from one to another. Now let us say balance of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. We know that the percentage of carbon dioxide and oxygen is almost fixed in the atmosphere. The percentage of oxygen is 21%, whereas percentage of carbon dioxide is 0.03%. जो परसेंटेज है गैसेस का एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट. अब इसको बैलेंस कैसे होता है, ये कांस्टेंट कैसे हो रहा है? सो देयर आर 2 प्रोसेसेस. One is respiration, another is photosynthesis. So these 2 processes are responsible for balancing oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. अब देखिए कैसे क्या होता है. So respiration जब हो रहा है तो plants and animals एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे विल टेक. So during photosynthesis green plants take in carbon dioxide from atmosphere and in turn it releases oxygen into the atmosphere. So in this way there is balance between the oxygen and carbon dioxide. In forest large number of plants are present, so that is why forests are called as green lungs. Green lungs हम उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में डिफरेंट वेराइटीज के डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स and animals are present. So due to the presence of different variety of plants, forests are called as green lungs. Why? Because all the plants will release oxygen into the that atmosphere by the process of photosynthesis. यहाँ देखिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय प्लांट्स एंड प्लांट्स अगेन रिलीजेज एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. सो इन दिस वे देयर इज बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हियर ऑल्सो इट इज अबाउट ऑक्सीजन साइकिल, द सेम सिचुएशन दैट during photosynthesis oxygen is evolved into the atmosphere and that oxygen is utilized by animals and plants during respiration, and during the respiration CO2 is released which is again taken by the absorbed by the plants, green plants. Now let us see what are the importance of forest.
बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट पहला इम्पोर्टेंस ये है कि इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, तो नेचुरल हैबिटेट यानी लिविंग प्लेस उसको दे रहा है। Forest helps in maintaining balance of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. Just now we have seen that how the percentage of oxygen and carbon dioxide is balanced by two processes, that is respiration and photosynthesis. So forest helps in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide. It also helps in bringing good rainfall. जितना ज़्यादा पौधा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, एंड अल्टीमेटली द रेन विल अकर. फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग दैट सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोडेड, मीन्स इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन. मिट्टी का कटाव से बचता है, क्योंकि आपको पता है कि रूट ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल फर्मली. जो जड़ें होती है वो सॉइल को पकड़ के रखता है. तो फॉरेस्ट क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव से बचा रहा है. It also helps to absorb rainwater, and thus it helps in increasing the groundwater and water table also. Groundwater बढ़ेगा. Large number of products, just we have read earlier, like timber, wood, firewood, gum, medicinal plants, medicinal oil, sealing wax, all these are obtained from the forest. Some peoples are living in the forest area, so they get various products from the forest for their livelihood. Means अपनी जीविका को पालन करने के लिए वहाँ से जो मिलता है चीज़ें, उससे वो काम चला रहे हैं. So they are obtaining all these various products from the forest. They get food from the forest, they get shelter and medicines from the forest. आयुर्वेदिक मेडिसिन सब का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है. फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग डाउन टेम्परेचर. टेम्परेचर कम होता है. आप जंगल में जाइए, समर में भी जाइए, तो देखिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ आपको ठंडा लगेगा, कम गर्मी होगी. एंड दस इट हेल्प्स इन चेकिंग द ग्लोबल वार्मिंग, यानी टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन वाटर साइकिल. यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है. इरोजन कंट्रोल कर रहा है, टिम्बर मिल रहा है, हैबिटेट है डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, फूड वी आर ऑब्टेनिंग, ऑक्सीजन, क्लीन एयर वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट. थैंक यू. फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन.